the Babylonian Empire, the Neo-Babylonian Empire, as we see in chapter 2 and chapter 7, both the visions that are recorded in the book of Daniel. In chapter 2, Babylonian Empire, Babylon and the king Nebuchadnezzar is represented by the golden head of the image. And in chapter 7, Babylonian kingdom and Nebuchadnezzar is represented by a lion with eagle wings. So I'll just read the first paragraph and we'll go to the next. The golden head and eagle winged lion are undisputedly interpreted as Babylonian kingdom beginning from Nebuchadnezzar, whose rule was glorious like gold and lion, flying high with eagle wings. Daniel's story and vision during Babylonian rule is restricted to the periods of kings Nebuchadnezzar and Belshazzar. Last line, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो in last line I have written, Daniel's story and vision during Babylonian rule is restricted. Restricted मतलब सीमित है. restrict जो वर्ड को अलग अलग मतलब है, एक मना करना ये भी मतलब है, इधर मतलब ये है सीमित. मतलब दानियल का स्टोरी और विजन ये बाबिलोन के नियो बाबिलोन पीरियड में इतना सारा राजा था. कितना था? 1 2 3 4 5 6 प्लस नेबुकदनेस्सर का पिता का भी है, तो 7 किंग्स था नियो बाबिलोन पीरियड में. पर सिर्फ 2 राजाओं के समय का कहानी किस किताब में पाया जाता है? देयर आर लॉट ऑफ किंग्स कमिंग इन, ऑलमोस्ट 6 or 7 किंग्स कमिंग इन द नियो बाबिलोन पीरियड फ्रॉम द फादर ऑफ नेबुकदनेस्सर, whose name is Nabopolassar, to Nabonidus. There are 6 to 7 kings, but Daniel's book tells only stories that happened in the times of 2 kings in Babylonian period. That is, first one is Nebuchadnezzar. The stories from chapter 1 to 4 happens in the time of Nebuchadnezzar, the second king. Then the second king is Belshazzar. Chapter 5 to 7, the vision is happening in the period of Belshazzar. So Nebuchadnezzar is the second king, Belshazzar is the last or the 6th king. Okay, but there are a lot of kings, but only the incidents narrated in the first part of Daniel and the vision that is happening in the Babylonian period only happens in the times of 2 kings. One is Nebuchadnezzar. In the time of Nebuchadnezzar, the incident that have happened is recorded in chapters 1 to 4, and chapters 5 to 7 happens in the time of Belshazzar. So visions and incidents, stories that happened in these 2 kings period is recorded in the book of Daniel, not others. And next paragraph. So you can see Nebuchadnezzar comes in the top, 605 to 562. Then Belshazzar comes at last between 556 and 539. And it was in 539 the Medo-Persian kings came and attacked. Yesterday I was telling about the party Belshazzar conducted, and the hand appeared and wrote the judgment of the Lord on the wall. So that night itself Medo-Persians came and attacked Babylon, and Babylon power fell. So that happened in 539. Okay, the second paragraph. It was during the reign of Nabopolassar. Nabopolassar is the father of Nebuchadnezzar. It was during the reign means rule. It was during the reign of Nabopolassar, dating from 626 to 605 BC, the father of Nebuchadnezzar. Babylon began to grow as a strong power in the West Asian region. तो नेबुकदनेस्सर का पिता नेबोपोलासर का समय से बाबिलोन एक सुपर पावर के रूप में, एक शक्तिशाली देश के रूप में बढ़ने लगा. कहाँ? एंशियंट वेस्ट एशिया, उस रीजन जो मैप मैंने दिखा, उस एरिया में बाबिलोन एक सुपर पावर के रूप में बढ़ने लगा. The second line, he defeated Assyria. नेबुकदनेस्सर किसको हराया?
he defeated Assyria. Assyria उससे पहले सुपर पावर था. He defeated Assyria, which was the superpower in that part of the world. Ancient West Asia का उस समय का सुपर पावर था Assyria. उन लोगों को हरा के बहुत सारे युद्ध किया, बहुत लंबे समय तक उनके साथ युद्ध किया. 626 से लेकर 612 तक ये पीरियड में इतना साल उधर युद्ध हुआ उनके साथ. उसके बाद आखिर में क्या हुआ, 612 में क्या हुआ, निनवे के ऊपर, निनवे कैपिटल था असीरिया का, कैपिटल को जो क्या है राजधानी को कब्जा करते हुए असीरिया को क्या है गिराया, मतलब हरा दिया. तो नेबुकदनेस्सर ने असीरिया को हराकर क्या है बाबिलोन को धीरे धीरे एक सुपर पावर के रूप में या एक साम्राज्य के रूप में बढ़ाया आसपास के देशों को. अगर असीरिया को हराएंगे तो असीरिया के नीचे जितने भी देश है वो सब किसके हाथ में आएगा, क्योंकि असीरिया एक सुपर पावर है. असीरिया के नीचे और भी बहुत सारे देश है. तो असीरिया को हराएंगे तो उनके नीचे जितने देश है, जितने राजा है, वो किसके हाथ में आ जाएगा, बाबिलोनियन पावर के अंडर आ जाएगा. सो व्हाट असीरिया हैड लॉट ऑफ वैसल. वैसल मतलब अधीन में छोटे छोटे देश. वैसल मतलब क्या है, एक बड़ा सम्राट होगा, उसके नीचे छोटे छोटे राज्य और देश के राजाएं होते हैं. तो छोटे छोटे देश और राजाओं को बोलते हैं वैसल्स, मतलब एक प्रकार का गुलाम जो सम्राट का अधीन में उनके कहने के अनुसार ये वैसल्स राज करना है. ठीक है. सो असीरिया वाज अ ग्रेट पावर. असीरिया हैड लॉट ऑफ colonies or small kings and kingdoms under Assyrian power because Assyria was a superpower. And Babylonian king Nabopolassar, the father of Nebuchadnezzar, defeated Assyrians through a series of wars beginning from 626 to 612. At last in 612 he captured Nineveh, the capital of Assyria, and he took over the power from Assyria. So all the small kingdoms and kings which were under Assyria came to the hands of Babylon. That's how Judah also came into the hands of Babylon at that time. Then what happened? After this slide, after the decline of Assyria. Decline means कमजोर होते जाना. Decline means फोन में डिक्लाइन का मतलब क्या है, कॉल काटना. डिक्लाइन देखा होगा. इधर डिक्लाइन का मतलब क्या है, धीरे धीरे नीचे जाना या घटते जाना. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ असीरिया जूडा बिकेम वैसल टू बैबिलोन. मतलब वैसल मतलब एक सम्राट के अधीन में होना, इसको बोलते हैं वैसल. वैसल किंग मतलब एक ऊपर एक सम्राट होगा, उसके अधीन में उसका बात सुनकर राज करना होगा. वैसल किंगडम मीन्स एक साम्राज्य के अंदर राज को बोलते हैं वैसल. एक 1 minute, just cut that. Decline of Syria, Judah became vassal to Babylon. Judah सीरिया के बाद यहूदा देश और यहूदा राजा किसके अधीन में आ गया, बाबिलोन के अधीन में आ गया. Judah became vassal to Babylon and was under siege. siege मतलब क्या है, सीज इसको बोलते हैं. सीज का मतलब पूरे तरह से गुलाम नहीं हुआ. मतलब सीज मतलब हिंदी में वो शब्द मैंने, जैसे एक बड़ा देश के राजा आकर अपना सेना के साथ आकर दूसरा देश का राजधानी के चारों तरफ बाड़ा बांधते हैं, मतलब छावनी डालकर, मतलब उस देश दूसरा राजा के कंट्रोल में हो जाता है. देश तो उधर है, लोग भी उधर है, पर पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है. ऐसे करने के लिए बोलते हैं सीज. सीज, दैट वर्ड मीन्स ए पावरफुल किंग इज कमिंग टू अनदर king or the capital of the kingdom and they are taking control of the city by their army. Okay, so that's how Judah became vassal to the Babylon. It became under the siege from year 589 to 587 BC. For around 30 months, 30 महीने बाबिलोन के अधीन में रहा यहूदा. यहूदा का राजा उस समय कौन था, यहोयाकीम. That time the king of Judah was Yehoiakim. Next line. Egypt was another great power during that time. उस समय इजिप्ट दूसरा एक बड़ा
पावर था. इन द स्टार्ट ऑफ BC 6th century, मतलब BC 6th century का बिगिनिंग में क्या हुआ? When Egypt appeared to be more powerful, उधर रिपीटेशन आ गया, वो बाद में मैं एडिट करूंगा. When Egypt appeared to be more powerful, Judah under Jehoiakim aligned मतलब साथ जुड़ना, ठीक है. Jehoiakim aligned with Egypt and rebelled against Babylonian by refusing to pay the tribute money. I just told about that. पहले बाबिलोनियन सीज के अंडर था, बाबिलोन का अधीन में था. जुड़ा was under the Babylonian power after Assyria declined. But towards the beginning of 6th century, Egypt started to win some wars and they appeared more powerful. For a short time, that time what happened? Babylon was also powerful. The Judean king Jehoiakim started to depend on Egypt. He aligned with Egypt. He started to join with hand in hand with Egypt and rebelled against Babylon. Babylon was the authority over Judah. So how they rebelled? They told we won't pay the tribute money. Money means every year they have to pay a certain amount of gold and silver and money to the King Nebuchadnezzar in order to live peacefully in the place. That is like a tax. So they told they refused to pay tax and the tribute money. That's how they rebelled. Jehoiakim king rebelled. Then what happened? In 587, Jehoiakim died. So that time they were rebelling against Babylon. Then who became king? Jehoiakim's son, Jehoiachin. Jehoiakim or Jehoiachin. Jehoiachin became son. He was only 18 years old. Chota ladka tha. 18 years old when he became king. What happened? After he becoming king, only just after 3 months, who came? Nebuchadnezzar came in 587 and he destroyed Jerusalem city. He destroyed the walls of Jerusalem. He destroyed the temple of Jerusalem. He took lot of people to. Earlier he took so many people. That's how Daniel also went to exile. But now also a lot of people he took to exile. In 587, everything was destroyed in Jerusalem. That's how the last destruction happened in Jerusalem, 587 BC. So during the time of Jehoiachin, the son of Jehoiakim, who was 18 years old when he became king, was defeated by Nebuchadnezzar in 587 BC and Jerusalem was destroyed. Jehoiachin और Jehoiakim ये दोनों बोल सकते. Jehoiakim was prisoner in Babylon for 37 years. When Nebuchadnezzar came and destroyed Jerusalem, he made Jehoiakim prisoner. This 18-year-old boy, the king, he took as a prisoner. He took him as a captive and put him in the jail of Babylon. राजा को भी उठाकर कहाँ डाला? बंदुआई में डाला. कितने साल? 37 साल तक ये यहोयाकीन कहाँ था? बंदुआई में उनके कब्जे में था. कब रिलीज किया गया? एंड वॉज रिलीज्ड इन 560 BC. उसके बारे में कहाँ लिखा है? 2 Kings 25-27. कोई पढ़ सकते? Can anyone read 2 Kings 25-27? ये यहूदा के राजा यहोयाकीम के 30वें वर्ष में अर्थात 30 वर्ष बेबीलोन का राजा एविन राजगद्दी पर विराजमान हुआ. उसी के 12वें महीने के 27वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीम को बंदीकरण से निकालकर बड़ा पद दिया. Okay. So in 2 Kings chapter 25-27, we read that in the time of which king Jehoiakim got released? Evil Marduk. Evil Marduk is, who is that?
अनदर नेम आई टोल्ड, अमेल मर्दुक। इस राजा के नेबुकदनेस्सर का बेटा का समय में, जस्ट अ मिनट, वन मोर कॉल इज कमिंग, यू कैन जस्ट कट। क्या इविल मार्दुक, उस आयत के अनुसार देयर इज अ किंग कॉल्ड इविल मार्दुक, द रियल नेम इज अमेल मार्दुक। इन हिज टाइम Jehoiakim got released after 37 years of imprisonment. But what about Daniel? Daniel was already in exile when Judah was captivated in 605 BC. जब पहले बार बाबिलोन के राजा आकर यहूदा के ऊपर छावनी डाला, उस समय किसको ले गया था? दानियल को और एसकेल, ऐसे जो पहला झुंड का जो बंदुआई में जो लोग गए, उनको उस समय लेके गया था। एनी डाउट्स टिल दिस स्टोरी? एनी डाउट्स? ये 37 साल बनवाए में था, इसमें 33 बार। कहाँ, कौन सा आयत? सेकंड किंग, अच्छा 33 लिखा है। जस्ट अ मिनट, आप ये माइनस कर सकते हैं। 587 से 560 माइनस करेंगे तो कितना है? लेट मी चेक। हाँ, सेकंड किंग्स, राइट? Uh, 25 का 27, in the 37th year of the exile of King Jehoiakim of Judah, in the 12th month, हिंदी में क्या लिखा? 33? सबका हिंदी बाइबल में ऐसा है। You can cut the video for a while. करेक्ट है, 33 है। 587 माइनस 560 कितना है? नहीं, और कम हो गया फिर। कोई भी किताब, ऐसा बहुत सारे जगह में है डिफरेंस। इसका मतलब बाइबल गलत है ये नहीं है। सबसे पहला एक डॉक्यूमेंट लिखा होगा, मतलब दानियल जब ओरिजिनली लिखा, या जो भी लेखक है ओरिजिनली लिखा, एक मैन्युस्क्रिप्ट होगा। एक मैन्युस्क्रिप्ट मतलब पहले जो लिखा गया। फिर बाद में क्या है, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट किसी के पास नहीं है। फिर एक एक पीढ़ी के लोग उससे कॉपी करते रहा, तो कितना पीढ़ी आगे आ गई, कितने साल बीत गया, तो कुछ ना कुछ गलती हो जाए, क्योंकि इंसान कर रहे हैं। इंसान क्या कर रहे हैं? आज के ज़माने के जैसे प्रिंटर नहीं था, हाथ से देख के लिखना था, तो गलतियाँ कुछ ना कुछ होगा। नाम में गलती हो सकता है, डेट में गलती हो सकता है, कैसे भी गलती हो सकता है, वो आम बात है। तो ऐसे बातों में ध्यान नहीं। 33 साल हो या 37 साल हो, वो जेल में रहा, बंदुआई में था, उस बात पर ध्यान देना। वो भी लंबा समय तक, 30 से ऊपर साल तक, 3-4 साल का फर्क उधर आ रहा है। तो ठीक है, ऐसे बातों पर ज़्यादा, क्योंकि वो आम बात है, क्योंकि इतना साल पुराना एक क्या है राइटिंग है, और कितना पीढ़ी से क्या है कॉपी करते आ रहा है। आज आ गया प्रिंटिंग प्रेस सब, तो ये होगा। और भी बहुत सारे भागों में है ऐसा गलतियाँ, वो इतना गंभीर रूप में लेने का ज़रूरत नहीं है। और कुछ? थैंक यू। मैं उसको ध्यान नहीं दिया था, मैं इंग्लिश और मलयालम में पढ़ा था। ठीक है, I'll try to find out if I can get an answer. I'll try to find out. कोशिश करूँगा उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। और कोई क्वेश्चन? Any doubt? Okay, the last paragraph. After this we will end the class. Nabonidus कौन है? लास्ट राजा है। बेल्शास्सर का पिता। Nabonidus was the last king according to the Babylonian records. He was the last king, but according to Daniel,
Belshazzar is the last king. This is because officially Nabonidus was the king, but when he moved to another place, shifted to another place, he kept Belshazzar, his son, as the ruler of Babylon area, that main capital area. So Daniel was in Babylon, that's why he is writing the name of Belshazzar. Okay? So according to Babylonian records and history, Nabonidus was the last king, ruling from 556 BC to 539 BC. Okay, coming to the notes, Nabonidus was the last king of the Neo-Babylonian Empire. Belshazzar, his son, was never a king in Babylonian records. बाबिलोन के इतिहास और रिकॉर्ड्स के अनुसार बेल्शास्सर का नाम कहीं भी नहीं है. Nabonidus है लास्ट किंग. When Nabonidus moved to Teima in Arabian region, his son was we should add a was there. His son was co-regent in Babylon. उधर छूट गया. So where did Nabonidus go? He moved to a place called Teima in Arabian region. So, but it also all come under Babylonian authority, all these places. So he moved to that place and built a center there, a capital or a residence there, a palace there. So he gave Babylonian area in the hands of his son. Co-regent means who is ruling like a partner. Co means what? It's partner, co-worker, cooperate. So it's like joint thing. So co-regent means पिता के साथ वो भी एक बाग को राज कर रहे थे. Co-regent. It's a partner king. It was in his time the Babylonian Empire fell and Medo-Persian Empire came to power. That also is not missing. I'll edit that. So किसके समय में? Nabonidus और उसका बेटा बेल्शास्सर के समय में बाबिलोन का एम्पायर नीचे गिरा और मेडो पर्शियन एम्पायर का शुरुआत हो गया. उसका कहानी कहाँ देखते हैं? चैप्टर 5 में. कल हम बात कर रहे थे. Yesterday we were talking about chapter 5. What is happening in chapter 5? When Belshazzar was conducting a party, they were drinking wine in the cups and vessels brought from the Jerusalem temple. He was a very wicked king. That time a hand appeared and wrote something on the wall. What was written? Mene mene tekel parsin. So what was the meaning? God has numbered and weighed. उसको नाप कर देखा, तोल कर देखा, वो उसमें कमी पाया. So what God is going to do? God is going to judge him and take away the kingdom, and another king and kingdom will come and destroy or defeat you, overpower you. That was the message from the writing on the wall. That night itself, who came? Darius, the Median king. Darius came and took over the Babylon. So that is the fall of Babylon according to the Daniel's account or Daniel's narration. So this is a small history about the Babylonian Empire according to the book of Daniel. So in vision, the golden head of chapter 2 and the eagle-winged lion of chapter 7, it denotes Babylonian Empire or Babylon. We were looking at a short story of the kings of Babylon, how Babylon came to power, what all happened in the Babylonian period, and how the Babylonian Empire fell or declined. Everybody got? Very good. Everybody understood? Okay. हाँ? क्या बोल रहे हैं? हिंदी में? ओके. अभी तक मतलब जो चैप्टर 2, दानियल चैप्टर 2 का जो सोने का जो सिर, गोल्डन हेड, और चैप्टर 7 का जो शेर, जिसके ऊपर क्या है? उकाब का पंख है. ये दोनों किसको दर्शाता है? नेबुकदनेस्सर राजा और बाबिलोन किंगडम को. ओके. तो उसके बाद हमने क्या देखा? बाबिलोन का उस समय का थोड़ा हिस्ट्री, बाबिलोन कैसे पावर में आ गया. नेबुकदनेस्सर का पिता के समय से वो धीरे धीरे
एक सुपर पावर, एक ग्रेट पावर बन गया। किसको हराते हुए? असीरियंस को हराते हुए। जब असीरियंस को हराते हुए बाबिलोनियंस एक बड़ा पावर बन गया, यहूदा भी किसके अंदर आ गया? नेबुकदनेस्सर का अधीन में आ गया 605 बीसी में। उस समय यरूशलेम को नाश नहीं किया, पर उसके चारों तरफ बाड़ा बांधा और चावड़ी डाला और अधिकार जताने लगा उस जगह के ऊपर। उस समय बहुत सारे लोगों को बंधुआई में लेके गए, उसमें दानियल भी है 605 में। बाद में कुछ 2.5-3 साल तक ये यहूदा किसके अधीन में था? नेबुकदनेस्सर के अधीन में था, और टैक्स पे करना था सम्राट को। नेबुकदनेस्सर को यहूदा के राजा यहोयाकीम टैक्स भी पे करना था। पर बाद में यहोयाकीम राजा किसके साथ जुड़ा? इजिप्ट के साथ जुड़कर किसके साथ बलवा किया? बाबिलोन के खिलाफ बलवा किया। तब क्या है, 587 में तब तक ये मर गया। कौन? यहोयाकीम। उसका बेटा राजा बना 18 साल का। कौन? यहोयाकीन। पिता यहोयाकीम, ये याकीन। अभी इसके समय में 3 महीने ही हुआ वो राजा बनाने के बाद। तब नेबुकदनेस्सर आकर पूरा यरूशलेम को नष्ट कर दिया 587 में। ठीक है। तब भी बहुत लोगों को बंधुआई में लेके गया। यहोयाकीन राजा को भी बंदी बनाकर लेके गया। 33 या 37 साल वो कहाँ था? जेल में था। फिर बाबिलोन राजा नेबुकदनेस्सर के समय में और बेलशस्सर के समय का कहानियां कहाँ बताया गया है। सारे राजाओं के समय में क्या क्या हुआ ये नहीं बताया गया। कुछ कहानियां जो नेबुकदनेस्सर के समय में हुआ वो लिखा है कहाँ? पहला चैप्टर से लेकर 4th चैप्टर तक। और जो कुछ बेलशस्सर के लास्ट किंग के समय में हुआ 5th चैप्टर से लेकर 7th चैप्टर तक। इतना बात है बाबिलोनियन एम्पायर में जो हुआ, कहाँ लिखा है? दानियल की किताब में लिखा है। लास्ट किंग था नेबोनिडस, वो है ऑफिशियल किंग, लास्ट किंग। उसका बेटा था बेलशस्सर। नेबोनिडस कहाँ गया? तेमा करके एक जगह में गया, मूव कर दिया उधर की ओर। तब बाबिलोन को अपना बेटा के हाथ में दे दिया। उसके समय में क्या हुआ? मेदो पर्शियन पावर्स आकर उसको बाबिलोन बेलशस्सर को हराकर बाबिलोन का कब्जा, राजधानी का कब्जा किया। तो इतना है बाबिलोनियन एम्पायर का कहानी दानियल की किताब के अनुसार। तो ये बाबिलोन एम्पायर गिरने के बारे में उसी किताब में लिखा है चैप्टर 5 में। वो गिरने के बारे में मैंने बोला, जो विजन हाथ अपीयर हुआ और क्या हुआ दीवार में, ये बेलशस्सर के लिए जो न्याय, परमेश्वर उसको न्याय करने वाला करके एक मैसेज लिखा। उसी रात को मेडियन किंग दारियस आकर उसको हराया, बेलशस्सर को हराया, बाबिलोन को कब्जा में ले लिया। तो इतना है बाबिलोन एम्पायर का कहानी। अंडरस्टूड? If you have any doubts, you can ask now. You'll just look at the map once more, then you will remember the story. Now we are able to understand what all happened where first Assyria was the power in 8th century. Then slowly their power decreased. Babylon came into power. That time Egypt also was a superpower. Babylon and Egypt was opposites, enemies. In between, Judah came under Babylon. They were vassals. Vassals means they were under the authority of Babylonian king Nebuchadnezzar. And at one time what happened, Judean king Jehoiakim aligned with Egypt, joined with Egypt and rebelled against Babylon. And in 587 Jehoiakim died, but the same year Babylonian king Nebuchadnezzar came and destroyed Jerusalem completely. Jerusalem's wall was destroyed, outer wall was destroyed, the temple was destroyed, the city was destroyed. A lot of people were taken into exile. But Daniel was already taken into exile in 605 BC. And that time Jehoiakim was the king, who was the son of Jehoiakim, was just 18 years old. He was also taken as prisoner and he was in the exile. Then
And what else? Then afterwards, what happened? At the time of Belshazzar, Median king Darius आकर इसको हराया और बाबिलोनियन किंगडम का क्या है, गिरना शुरू हो गया. So that's the story. Then next story will be about these two, Media and Persia. So in second chapter, which metal represent Media and Persia? Silver. Chapter 2 में कौन सा मेटल इस्तेमाल किया है मीडिया और पर्शिया के लिए? सिल्वर. चेस्ट एंड आर्म ऑफ सिल्वर. दो हाथ, ये दो राज्यों को दिखाता है, एक मीडिया, एक पर्शिया. देन चैप्टर 7 में उस 4 पशुओं का दर्शन में कौन सा पशु आता है इसमें? मीडिया और पर्शिया के लिए कौन सा पशु इस्तेमाल किया है? बेयर, रीच क्या है? देन इन द 8th चैप्टर विच एनिमल? रैम, जो बेड है. रैम किसको दर्शाता है? मीडिया एंड. So that we will discuss at night. Okay? Till that time what will you do? अभी बाहर नहीं जाना. 1 बजे तक इधर बैठकर जो काम करना है करो. नोट्स कंप्लीट करना. So you can complete the